properties, physical and chemical reactions. Already we have studied. Now we have to start with the chlorine and their compounds. Yesterday we have studied about chlorine also, but again we have a recap about the chlorine, that how it will be discovered and why the name chlorine is given to the compound, to this element. Okay, as you know that chloro, chloro stands for the green. Okay, so chlorine का कलर ग्रीनिश येलोविश होता है, इसलिए इसको क्लोरो कहा गया. चलिए स्टोरी समझ लेते हैं, फिर से जल्दी से रिकैप करते हैं. Chlorine was discovered in 1774 by Shelley by the action of HCl on MnO2. Later on, in 1810, Davy established its elementary nature and suggested the name chlorine. क्यों नेम रखा? It's due to its color. क्योंकि ग्रीक भाषा में क्लोरोस का मतलब ग्रीनिश येलो होता है और ये ग्रीनिश येलो कलर का दिखता था. प्रिपरेशन की बात करते हैं, किसी भी एक तरीके से बनाया जा सकता है जो नीचे दिए हुए एग्जांपल्स हैं. By heating manganese dioxide with concentrated hydrochloric acid, that is MnO2 plus 4HCl, that gives you MnCl2 and Cl2, the desired product, what you actually want, plus 2H2. However, a mixture of common salt and concentrated H2SO4 is used in place of HCl. The action of HCl on potassium permanganate, that is 2 KMnO4 plus 16 HCl, that gives you 2 KCl plus 2 MnCl2 plus 8 H2O, and finally the desired product, that is chlorine, what you want. Manufacture of chlorine. So if you want to manufacture it industrially, you have some options also. The first one is the decon process, which is very, very important for the board examination, as I earlier told you. Please read this and memorize this one, the decon process. By oxidation of hydrogen chloride gas by atmospheric oxygen in the presence of copper chloride at 723 Kelvin, you can obtain the chlorine, and this is known as Decon's process. Is it clear? The very reaction is given that 4HCl plus O2 in the presence of CuCl2. Here it is. What? It is very small. Now I can write it CuCl2. Okay. And that gives you 2Cl2 plus 2H2O. I think it is very, very clear. Electrolytic process. Chlorine is obtained by the electrolysis of brine, that is concentrated solution of NaCl. Okay. Chlorine is liberated at the anode. You have to memorize this one. Okay. And it is also obtained as a byproduct in many chemical industries. Now, we are moving to the properties. As the name suggests, it is a greenish yellow gas with pungent and suffocating odor. Okay. It is about 2 to 5 times heavier than the air. It can be liquefied easily into greenish yellow liquid, which boils at 39 Kelvin. It is soluble in water. Is it clear? Chlorine reacts with a number of metals and non-metals to form chlorides. So you can see this very easily. These are the reactions. For example, chlorine, when react with the aluminium, it forms aluminium chloride. 2Al plus 3Cl2, it gives you 2AlCl3. Then with sodium, aluminium, sodium, and then iron. So these are metals. So when chlorine react with these metals, they form the corresponding chloride, that is aluminium chloride, sodium chloride, ferric chloride. Okay. Then non-metals, phosphorus and sulfur.
When they react with phosphorus and sulfur, they also form chlorides of these components. You can see P4 plus 6Cl2, and it is what? 4PCl3, phosphorus trichloride. Phosphorus have ability to form pentachloride also, but trichloride is more stable than the penta one. It has great affinity for hydrogen. All halogens have great affinity for the hydrogen. So you can say that it has a great affinity for the hydrogen. It reacts with the compounds containing hydrogen to form HCl. It is reacted with hydrogen only. It easily forms HCl. And when it reacts with other compounds which have hydrogen like H2S, then it replaces the sulfur from this H2S and form the 2HCl, and sulfur is free now here. Okay, and the chlorine now reacts with this site, so it replaces the carbon. So 10 carbons are replaces very easily, replaced from this compound, and hydrogen are accepted by the chlorine molecules. So it is converted into HCl. Dilute alkalis chloride produce a mixture of chloride and hypochlorite, but with hot and concentrated alkalis, it gives chloride and chlorate. So you may note this point, important for the upcoming board examinations. So please study this one and remember this one. Okay, you have to remember this one. How the nature is changed with the dilute, cold, and hot concentrated. Okay, examples are here. 2NaOH, that is sodium hydroxide, which is cold and dilute. When react with the chlorine, it gives sodium chloride and sodium hypochlorite. Okay, so they form hypochlorite. Now, when the NaOH is hot and concentrated, when the NaOH is hot and concentrated, when it react with the chlorine, it gives you again chloride, but here the byproduct is changed. Now it is sodium chlorate. And this is what? Sodium chlorate. So this is how the concentration and reactions will be changed. With dry slaked lime, it gives bleaching powder. तो ड्राई लाइम के साथ ये क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्मेशन करता है, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा Ca ब्रैकेट में OCl ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH2 डॉट 2H2. Chlorine reacts with hydrocarbons and give substitution product with saturated hydrocarbons. Again, point to be noted. This is what's important for the board. This is important for the board as well as for the NEET examinations. Okay, when it reacts with the unsaturated hydrocarbons, it gives the products of addition reaction. Two examples are here. First one is the saturated hydrocarbon, that is methane. All four bonds are saturated with the hydrogen. And here, when chlorine react with this saturated product, it will give you methyl chloride, which is a substituted product, which is a substituted product. Whereas in the case of ethene, when uh, chlorine reacts with the ethene at the room temperature, it gives you C2H4Cl2, and this is the addition reaction. So this product is what? The product of addition reaction. Is it clear? Okay. Now we can say that chlorine water on standing lose its yellow color due to the formation of HCl and HOCl. Hypochlorous acid, hypochlorous acid so formed give nascent oxygen. Therefore, you can say that it is the best oxidizing agent. Chlorine oxidizes ferrous to the ferric and sulfide to the sulfate. Chlorine oxidizes sulfur dioxide to trioxide and iodine to iodate.
In the presence of water, they form sulfuric acid and iodic acid respectively. Okay. Now see the reaction. See the reactions here. So 2FeSO4 plus H2SO4 plus Cl. Now here Cl reacts differently and it forms HCl. And it is what? FeSO4, that is sulfate. Okay. तो सल्फेट इज फॉर्म्ड, जैसा कि अभी आपने ऊपर सुना कि देन Na2SO3 प्लस Cl2 प्लस H2O. अब यहाँ पे क्या है कि वाटर प्रेजेंट है, वाटर की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा? NaSO4. ठीक है, वाटर के प्रेजेंट में NaSO4. इसके अलावा हम सल्फर की बात कर लें, SO2 डाइऑक्साइड. डाइऑक्साइड जब वाटर की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, HCl बन गया. इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. अगेन इसी तरह से आयोडीन की बात करें. आयोडीन अगर वाटर के प्रेजेंट में क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हमें HiO3 मिलता है, 2HiO3 मिलता है. दैट इज आयोडिक एसिड. दैट इज व्हाट? आयोडिक एसिड. इज इट क्लियर? और बाकी HCl तो जो बनना है वो बनेगा. तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है. सो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोरीन इज अ वेरी पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट. ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन. एक्चुअली इसका जो ऑक्सीजन निकलेगा नेसेंट ना, वो कलरफुल कपड़ों से मिलके इसे कलरलेस कर देगा. नीचे यही रिएक्शन दिया भी हुआ है. इट ब्लीचेस vegetable and organic matter in the presence of moisture. Bleaching effect of chlorine is permanent. ये रिवर्स नहीं होता ना, ये परमानेंट हो जाता है. एक बार रंगहीन हो गए कपड़े तो कलरलेस ही रहेंगे. So chlorine when react with H2O, that is आप कह सकते हैं क्योंकि हमें मॉइस्चर चाहिए ना, in the presence of moisture इसलिए H2O है यहाँ. So it gives you 2HCl plus O. अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, यही अपनी एक्टिविटी शो करता है. ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, when it combined with the colored substance, so it convert the colored substance into colorless one. It is used for bleaching wood pulp required for the manufacture of paper and rayon, bleaching cotton and textiles. Second, in the extraction of gold and platinum. Third, in the manufacture of dyes, drugs, organic compounds such as carbon tetrachloride, CHCl3, and then DDT, refrigerants. Fourth, in sterilizing the drinking water, and fifth, the preparation of poisonous gases such as phosgene, that is COCl2, tear gas, CCl3, NO2, mustard gas, ClCH2CH2S, CH2CH2Cl. So this is all about the chlorine. Now we are moving to the hydrogen chloride. Hydrogen chloride. So इसकी जो प्रिपरेशन की स्टोरी है, ग्लाउबर से शुरू होती है. ग्लाउबर prepared this acid in 1648 by heating common salt with concentrated sulfuric acid. And डेवी का बहुत रोल है 17th ग्रुप में. डेवी का बहुत रोल है. डेवी in 1810 showed that it is a compound of hydrogen and chlorine. प्रिपरेशन की बात करते हैं तो in laboratory it is prepared by the heating of sodium chloride with concentrated sulfuric acid, that is NaCl plus H2SO4 at 420 Kelvin. It gives you NaHSO4 plus HCl. So what is the product? We actually want HCl. So this is our product. Okay. Now again, NaHSO4 when treated with NaCl, it gives you NaSO4, that is sulfate, sodium sulfate, and HCl.
but this time temperature is going to be changed. Now, now the temperature is 823 Kelvin. So, HCl gas can be dried by passing through concentrated sulfuric acid. Okay. Now we are moving to the properties. इसमें एक एक्वा रीजिया बनाने को आता है और वो बोर्ड में हर साल पूछता है, तो जरूर याद कर लेंगे. अभी मैं वहां पे इंपॉर्टेंट लिख भी दूंगा, टिक भी कर दूंगा. प्रॉपर्टीज. इट इज अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस. तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, कलरलेस तो है लेकिन बहुत ही पंजेंट, तीखा तीखा स्मेल होता है इसका. देन इट इज इजीली लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड. बॉइलिंग पॉइंट होगा 189 केल्विन एंड फ्रीजेस टू अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा 159 केल्विन. इसके अलावा कि ये एक्सट्रीमली सॉल्युबल होता है वाटर में और आयोनाइज कर देता है जब भी वाटर में जाता है. इसीलिए हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में HCl का बहुत यूज करते हैं. इज इट क्लियर? इट्स aqueous solution is called हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब भी हम HCl का aqueous solution लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. किसी को कोई कंफ्यूजन तो होगी नहीं, बहुत इजी है. हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज Ka indicates that it is a strong acid in nature. ये बहुत ही strong acid है अपने नेचर वाइज अगर बात करें. It reacts with the NH3 and gives white fumes of NH4Cl. तो अगर white fumes निकले रिएक्शन में तो वो किसके होंगे? अमोनियम क्लोराइड के होंगे. किसके होंगे? अमोनियम क्लोराइड के होंगे. तो जब भी अमोनिया के साथ HCl का रिएक्शन होता है, व्हाइट फ्यूम्स निकलती हैं, पंजेंट स्मेल के साथ निकलती हैं, तो हम समझ लेंगे कि वो किसकी है? अमोनियम क्लोराइड की फ्यूम्स है. सो रिएक्शन भी यहाँ पे गिव NH3 plus HCl that gives you NH4Cl. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब इतना ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि ये वाइबा में भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी आता है, और नीट वगैरह और नीट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है. इसको हम कहते हैं एक्वा रीजिया. एक्वा रीजिया. When three parts of concentrated HCl, that is 3HCl, plus one part of concentrated HNO3, 1HNO3, ठीक है. When they are mixed, then the solution which is formed is known as aqua regia. Is known as aqua regia. अब ये एक्वा रीजिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं, है ना? इसके पीछे भाई बिना इंपॉर्टेंट हुए तो हम किसी चीज को महत्व देते नहीं. वो इसलिए ये जो एक्वा रीजिया है जो कि इस तरीके से बनता है ना, इट इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग द नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम. तो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने में यूज होता है, इसलिए हम इसकी इतनी स्टडी करते हैं. अब समझ में आया? And then reaction is given here Au plus 4H. अब यहाँ पे 4H क्या प्रोटॉन के फॉर्म में है, प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 4Cl. यहाँ भी ये नेगेटिव आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस है, प्रोटॉन्स है. ठीक है. इट गिव्स यू AuCl4 NO2H2O. इसी तरह से प्लेटिनम के साथ होगा 3Pt plus 16H plus 4NO3. It gives you plus 18Cl. It gives you 3PtCl2 plus 4NO plus 8H2O. ठीक है. रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद कर लीजिए. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. तो ये पैराग्राफ आप कभी भूल नहीं सकते. अगर भूलते हैं तो फिर आपका नुकसान होगा, आपके नंबर्स कम होंगे. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड decomposes salts of weaker acid, that is carbonates, hydrogen carbonates, and sulfides, etc. The reactions are given below. To CO3 plus
2HCl, it gives you 2NaCl H2O प्लस CO2। तो यहाँ CO2 गैस रिलीज हो रही है। इसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात करें, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। You can see this. When it react with the HCl, it also gives you the salt, water and CO2 is released here. अब यहाँ पे सल्फेट्स हो गए। सल्फेट जब HCl के साथ एक्ट करता है तो सल्फेट भी SO2 को रिलीज कर देता है और NaCl में कन्वर्ट हो जाता है। यूजेस की बात करें तो HCl is readily used in manufacture of chlorine, ammonium chloride and glucose from corn starch। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए। इसके बाद फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, इसका भी आप बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। एंड इट इज रेडली यूज्ड इन मेडिसिन एंड एज लैबोरेटरी एजेंट्स। ठीक है।